So this is the structure of human sperm. It has head, neck, body and tail. The head, ये जो है बेटा, ये है न्यूक्लियस. This is acrosome, but आपको ज्यादा नहीं याद रखना. So nucleus, that is single nucleus. Cells में होता है, control all the functions of the cell. This is mitochondria. So body, क्योंकि mitochondria है, provides energy to sperm because it has mitochondria. Tail helps in movement of sperm. जो नेक है इसमें ये सेंट्रियोल्स आते हैं, बट ज्यादा नहीं हम बताएंगे. नेक हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन एंड न्यूक्लियस कंट्रोलिंग सेंटर है हेड में. And you can see as there is only one nucleus, therefore this sperm is unicellular. This is unicellular. Can see बेटा एकदम quiet, एकदम quiet, बिल्कुल भी चूं जा कुछ नहीं. So this is human sperm. ठीक है. Then human egg. अगर हम देखें this is egg, this is nucleus and this is cytoplasm. No yolk in human egg, but this is nucleus. साइटोप्लाज्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो होंगे. देन दीज आर, ये जो हमने येलो कलर में दो तरह की, एक तो स्मूथ सी लेयर बनाई है, बाकी ये है दीज आर एग मेम्ब्रेन्स. क्या नाम है ये हम नहीं आपको बताएंगे क्योंकि नथिंग इज गिवन इन योर बुक. These are egg membranes. This is egg. Again, single nucleus and it is unicellular. Human egg. No yolk. टेंथ सी अगर बेटा आवाज आएगी तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा आपका सिस्टम. ठीक है. तो इधर इधर बेटा सब इधर स्क्रीन पे सामने. So this is human egg and human sperm. I think everybody has done. Maybe shift forward. Then, as you have seen, जैसे एक बच्चे ने बताया भी fertilization occurs in fallopian tubes to form zygote. Next point लिखिए, development of zygote. Development, ये देखिए फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे देखिए ये स्पर्म आए, ये एग है, ये जो है
ये बन गया जाइगोट। द क्लीवेज, क्लीवेज होता है डिवीजन, राइट? सो डिवीजन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट starts in the fallopian tubes and it forms 8 to 16 celled morula. लिख लो फटाफट, राइट डाउन। द क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट, आप यहाँ पे देख रहे हो एक सेल से 2 सेल बने, फिर यहाँ पे देख रहे हो 4 सेल बने, यहाँ पे 8 सेल बन जाते हैं। द क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट, राइट डाउन एवरीबॉडी, starts in the fallopian tubes to form मल्टीसेलुलर मोरुला। ब्रैकेट में लिख लेना 8 to 16 सेल, मल्टीसेलुलर मोरुला। एट टू 16 सेल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, मोरुला is then transported in blastocyst in uterus. Morula then moves in the uterus and develops a cavity. Morula देखो इस तरह से था, यहाँ पे, and develops a cavity to form blastocyst. ये कैविटी बन गई, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। आते सार इम्प्लांटेशन नहीं हुई है, ये कहां पे आया, कैविटी में आया है यूट्रस की। देन ब्लास्टोसिस्ट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस वॉल। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द ब्लास्टोसिस्ट इज देन, द ब्लास्टोसिस्ट इज देन implanted in the wall of the uterus, is implanted in the wall of the uterus। और फिर एक टर्म आ जाती है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। 3 to 4 years बैक ये क्वेश्चन MCQ में आया था। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या है, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस, धस जाना, किसी चीज के बीच में धस जाना, एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द थिक एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। क्या है, लिख लो बेटा एवरीबॉडी, राइट डाउन, क्योंकि ये चीजें डायरेक्ट तुम्हें नहीं मिलेंगी बुक में। एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, embedding of blastocyst in thick wall, ब्रैकेट में लिख लो एंडोमेट्रियम of uterus, endometrium of uterus। ठीक है, दिस इज इम्प्लांटेशन। अब हम देखते हैं कैसे हो जाती है। कह तो दिया हमने, बट एम्बेडिंग होती कैसे है, ये देखिए, ये है एंडोमेट्रियम। देखो ध्यान से देखो, आई होप एवरीबॉडी कैन सी इट। ठीक है, ये है एंडोमेट्रियम। क्या हुआ, जैसे ही जाइगोट आया तो थोड़ी सी वॉल जो है वो डिसॉल्व हुई, सो दैट
the blastocyst can go out, go in. तो यहाँ पे ये अंदर को जा रहा है, देख रहे हो आप, ये अंदर को जा रहा है, एंड दिस वॉल इज रीजेनरेटेड अराउंड ब्लास्टोसिस्ट. मैं अभी दोबारा से बना के दिखाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कि ये देखिए, यू नो, दिस इज द शेप ऑफ द यूट्रस. ठीक है. अब ये है जी. अब यहाँ पे देखो कहाँ पे क्या है. ये जो वॉल है, ये जो थिक वॉल है, ये मैंने तो बहुत अभी थिन बनाई है, ये बहुत थिक हो जाती है. दिस इज द एंडोमेट्रियम, जहां पे इम्प्लांटेशन होनी है. यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है. राइट. एट एनी प्लेस द इम्प्लांटेशन occurs. ठीक है जी. ये है एंडोमेट्रियम, यहाँ भी, यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल अब आ गया, यहाँ पे आ गया. लेट अस से हम इधर की बात कर ले. दिस इज ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है. तो अब थोड़ा सा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा. ये ब्लास्टोसिस्ट है. सिर्फ मैं एम्बेडिंग दिखा रही हूँ. ये यहां से एंडोमेट्रियम बीच में से डिसॉल्व हो. ठीक है. एंड देन डिसॉल्व के बाद जो ये रीजनरेट हुई है, ये इसके आसपास रीजनरेट हो गई. एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो जो भी है, ये यूट्रस की कैविटी में नहीं है, ये इसकी दीवार में, इसकी वॉल के अंदर एम्बेड हो चुका है. दिस ब्लास्टोसिस्ट इज एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. इमीडिएट नहीं होता, पहले यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आया, फिर उसने उस वॉल को थोड़ा डिसॉल्व किया, अंदर गया, एंड देन वॉल इज रीजनरेटेड around it. This is right. So this is implantation. ये इसकी आप देख रहे हो, ये बीच की कैविटी है, ये इधर एम्बेड हो गया है, इधर इसकी इम्प्लांटेशन हो गई है. नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी इम्प्लांटेशन हो सकती है. इज इट ओके? ठीक है. थोड़ा सा बनाएंगे ये फटाफट से. दिस इज इम्प्लांटेड एम्ब्रियो. ये देखिए, ये सारा, यू कैन सी दिस, दिस इज ऑल यूट्राइन वॉल. ये सारी यूट्रस की वॉल. ठीक है जी. आई होप डन. देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. आफ्टर इम्प्लांटेशन, राइट डाउन, आफ्टर इम्प्लांटेशन द एम्ब्रियो इज अटैच्ड टू द
uterus wall by placenta. Embryo is attached with the uterus wall by placenta. Embed तो हो गया यूट्रस के अंदर, यूट्रस की वॉल के अंदर, बट उसके साथ फर्दर कनेक्शन कैसे बनाना है? By placenta. So what is placenta? पता है कि बच्चे और मदर के बीच में कोई कनेक्शन है, बट एक्सप्रेस कैसे करेंगे? It is the intimate connection between fetus or embryo and the mother's uterine wall. It is the intimate connection between the It is the intimate connection between fetus or embryo and the mother's uterine wall. And it consists of, ये भी point लिख लीजिए, it consists of villi of fetus and villi of uterus wall. And it consists of villi of the fetus and villi of uterus wall. ये मदर की वॉल है, इधर देखो, सामने देखो पहले, ये मदर की वॉल में एक्सटेंशंस है फिंगर लाइक कॉल्ड एज विलाई, और ये फीटस की है. ये दोनों इस तरह से ऐसे अरेंज हो जाते हैं ताकि दोनों का कनेक्शन बहुत क्लोज आ जाए, सो दैट द सब्सटेंसेस कैन एक्सचेंज बिटवीन मदर्स ब्लड एंड फीटल ब्लड. यहाँ पे लिख लो, द विलाई कंसिस्ट ऑफ, ये आपके लिए है, पे लिखना नहीं है, but the villi on both sides consists of blood vessels. The villi of both sides means fetus की भी mother की भी consist of blood vessels. And you can see here, ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ fetus की दिख रही है, ये देखिए ट्री लाइक फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है जो आगे ब्रांच्ड है, दीज आर विलाई, राइट. ये भी फीटस की विलाई है, इसी तरह से मदर के यूट्रस वॉल की भी विलाई होती है, एंड दे आर कनेक्टेड लाइक दिस, राइट. विलाई आपको पता चली. एंड यहाँ पे क्या लिखना है? दैट इज फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा. Functions of placenta. तो फर्स्ट आ जाता है बेटा, दैट इज diffusion of oxygen from mother's blood to fetal blood. Diffusion of oxygen from mother's blood to fetal blood. Diffusion of CO2, then metabolic wastes of embryo in mother's blood. मदर का उस टाइम
जो है, she removes her metabolic waste as well as fetal metabolic waste. Through placenta. Placenta के थ्रू ही जाएगा. ठीक है जी. थर्ड आ जाइए. Diffusion of digested food and other nutrients from mother's blood to fetus. From mother's blood to fetus. ठीक है जी. So these are the functions of placenta. Pregnancy time कितना है? 9 months or 36 weeks plus minus 15 days. Fetus is surrounded by, ये जो है ये fetus है, embryo है. Fetus is surrounded by a fluid called as amniotic fluid. Fetus is surrounded by a fluid called as amniotic fluid. ठीक है जी. So this is about human reproduction, but I think you must have done this. थोड़ा सा. As you must have done in chemical control, chemical coordination. In females, I have told you about menstrual cycle. So this is menstrual cycle. ड्यूरेशन है 28 डेज. ये टिपिकल है, ऐसा नहीं कि अगर कुछ कम या ज्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है. नो. किसी के 30 डेज की ड्यूरेशन है, किसी के 25 डेज की ड्यूरेशन है, 23 डेज की. नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी रेगुलर. दिस इज डे 1 टू डे 5. हम डे 1 किसको कहते हैं? जब मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग शुरू हो. दिस इज मेंस्ट्रुअल फेज. और तकरीबन 5 दिन तक ब्लीडिंग चलती है. दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज. देन नेक्स्ट आ जाता है उसके बाद. दिस इज डे 14. 5 to 14. This is proliferative phase. During this क्या हो रहा है? Mature egg is formed. इस टाइम में क्या हो रहा है? एक mature egg बन रहा है. Then second point, the wall of the uterus becomes thick.
and is ready and gets ready for implantation. हो या ना हो, but it becomes ready for implantation in this phase. 14 से 15 डे के बीच में 13 भी हो सकता है, बट टिपिकल हम बात कर रहे हैं. ड्यूरिंग दिस फेज देयर अकर्स ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन अब आपको पता चल गया. सो ड्यूरिंग दिस फेज देयर आर maximum chances of fertilization if sperms are available, obviously. जब एग निकला है, क्योंकि एग की ज्यादा एज नहीं है, वो तकरीबन 24 आवर्स तक ही लिविंग रहता है, राइट? सो दिस इज द पीरियड ऑफ व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर. इसी टाइम में 13 to 15 डेज के बीच. एंड देन 15 से लेके 28th डे तक, this is called as secretory phase. यहां पे कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, दैट इज thick wall of uterus is maintained. And it waits for morula, or you can say embryo, for implantation. इस फेज में वेट करती है कि शायद फर्टिलाइजेशन हो गई होगी, शायद एम्ब्रियो अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा. Sometimes its wait ends early when the embryo comes, but sometimes no fertilization. ठीक है? So next is what will happen to, लिख लो क्वेश्चन, to menstrual cycle. पहला आपने बताना है if fertilization occurs, और सेकंड बताना है if no fertilization. फर्टिलाइजेशन हो जाएगी या नहीं. ठीक है? तो यहां पे हम क्या करेंगे, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, लिखिए, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स the thick wall of the uterus is maintained throughout pregnancy. उसके अंदर ही तो सब कुछ डेवलप हो रहा है. अगर वो थिक वॉल नहीं रहेगी, टूट जाएगी, तो बच्चा तो बेचारा मर जाएगा. ठीक है? If fertilization occurs, the thick wall of the uterus, यूट्रस सिर्फ अब इस फेज में है, सिक्रेटरी फेज में, और 9 महीने तक वो सिक्रेटरी फेज में रहती है. The thick wall of the uterus is maintained throughout pregnancy. Therefore, menstrual cycle stops. कोई 9 महीने में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है, कोई मेंस्ट्रुअल फेज नहीं है, सिक्रेटरी फेज पे आके रुक गई है.
menstrual cycle is stopped, comma, no menstruation or bleeding. कोई नया एग नहीं बनता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ नहीं, उसका काम सिर्फ अब क्या है, बच्चे की देखरेख करना। और नेक्स्ट सेकंड है जो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, इफ नो फर्टिलाइजेशन occurs, if no fertilization occurs, तब क्या हुआ? तो बेटा यूट्रस बेचारी जो है ना, तकरीबन 22-23 डेज तक वेट करती है ना। 15th डे के बाद एक हफ्ते तक, या एक हफ्ते से 1-2 दिन ज्यादा, ठीक है, वेट करती है कि शायद अब एम्ब्रियो आएगा, अब आएगा, अब आएगा। बट अगर नहीं आता, देन वो कहती है फिर मैं इतनी मोटी लाइनिंग का क्या करूं इतनी देर तक। देन इट्स थिक वॉल ब्रेक्स and comes out through vagina as menstrual flow. ठीक है, लिखो जरा, if no fertilization occurs, then at the end of the secretory phase, comma, the breakdown of thick wall of the uterus starts. The breakdown of thick wall of the uterus starts, and the new menstrual cycle begins. And the new menstrual cycle begins with the bleeding through vagina. Bleeding through vagina. The menstrual fluid, जो blood बाहर आ रहा है, the menstrual fluid consist of क्या होता क्या है उसमें, the ruptured wall of uterus and the dead egg. एग भी बेचारा मर चुका है. The ruptured wall of the uterus and the dead egg. Ruptured wall में cells भी है और बहुत सारा blood भी. So this is all about human reproduction. और हम फटाफट वर्कशीट बेटा, क्योंकि आज हम खत्म करेंगे. We have 5 minutes to go. सब टाइम हो गया, 5 मिनट है नहीं हमारे पास. नहीं मैम, 9:22 है, 9:20 बैड टाइम. 9:20 पे, ओके, नो वरी. ठीक है बेटा. So we have done reproduction in plants, we have done reproduction in humans, we have covered the worksheet of reproduction in plants. Humans की worksheet रह गई है, do it with your teacher. ठीक है, क्योंकि हम इस चैप्टर को बहुत ज्यादा नहीं हम एक्सटेंड कर पाएंगे. We have to start another thing. I hope it's clear to you. सबको समझ में आया? Yes, and may we take test of this chapter. एक कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक है, कोई बात नहीं, किसी दिन बीच में हम कर भी लेंगे. कि may we take your test of this chapter on Saturday? How many of you are ready? है ना? तो फिर अब प्रिपेयर. I will talk to your teacher, I will talk to the principal. We will have a test on Saturday. ठीक है? If it is not second Saturday, छुट्टी नहीं हुई, तो हम most probably आपका टेस्ट सैटरडे को लेंगे, नहीं तो मंडे को ले लेंगे. नो वरीज. ठीक है, बट अच्छी तरह से. आई होप आई हैव पुट माय मैक्सिमम एफर्ट टू यू. आपने किया नहीं हुआ था, इसलिए हमें ज्यादा टाइम लगता है. इज इट ओके? ठीक है. फ्रॉम मंडे, फ्रॉम वेडनेसडे वी विल स्टार्ट योर स्टैट्स. कर लिया सर? बस 1 मिनट में इनसे बात करूंगी. स्टैट्स कर लिया बेटा आपने, या सरफेस एरिया वॉल्यूम? कौन सा चैप्टर किया है मैथ्स में?
That's complete. Stats completed in all sections. Please raise your hands. In all sections. Very good. तो आज टीचर्स प्लीज इन्हें स्टैट्स की वर्कशीट आज ही प्रोवाइड कर देना. इट हैज ऑलरेडी बीन सेंट टू स्कूल, ताकि मंडे जो वेडनेसडे है वी विल स्टार्ट विद स्टैट्स एंड देन विद सरफेस एरिया एंड फॉल. ठीक है बेटा. एंड अच्छा मुझे अब ये भी बता दो लास्ट थिंग दैट व्हाट आर यू डूइंग इन साइंस नाउअडेज इन योर स्कूल. Carbon and compounds. कार्बन एंड कंपाउंड या रिप्रोडक्शन. कार्बन कंपाउंड्स किसी का खत्म हो चुका है? नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड विद कार्बन एंड कंपाउंड्स? Everybody has started. That's nice. That's nice. So after stats we will start with carbon and compounds. ठीक है जी. और ये करना. We will take one class after your math stats हो जाएगी तो हम एक contraception की क्लास लेंगे और फिर हम मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद ही हम टेस्ट करेंगे. ठीक है जी. ओके बेटा. बाय बाय. थैंक यू. बाय बच्चों. थैंक यू टीचर्स.